आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल सा एंड ब्यूटीफुल मदर एंड डॉटर ट्विनिंग आउटफिट, वो भी समर के लिए। चलिए इसे बनाना सीखते हैं। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बना रही हूँ मदर डॉटर ट्विनिंग आउटफिट, वो भी समर के लिए। तो मैंने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक लिया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल है। पहले मैं मदर आउटफिट कट कर रही हूँ, जिसके लिए मैं सिर्फ ए लाइन एक टॉप बना रही हूँ। मेजरमेंट जो है 38 साइज़ के लिए बना रही हूँ। और बाकी आप कितना कैसे मैंने लिया आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बेसिक कटिंग है ये, जो हम सिंपल टॉप कटिंग करते ब्लाउज कटिंग करते हैं वैसे ही। लेंथ इसका मैंने लिया है 34 इंच। कि यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लिया है मैंने, और 1 मीटर मेरा नीचे, हाफ मीटर मेरा नीचे फ्लेयर के लिए जाएगा। इसके नीचे मैं फ्लेयर लगाने वाली हूँ। तो टोटल 2.5 मीटर फैब्रिक मुझे लगा है मदर के लिए एंड 1 मीटर लगा है डॉटर के लिए। तो टोटल 3.5 मीटर फैब्रिक यहाँ पे हमको लगेगा मदर डॉटर आउटफिट बनाने के लिए, अगर आप 3 साल की लड़की के लिए बना रहे हैं तो। बाकी आप आगे मेजरमेंट्स एंड मार्किंग, कटिंग, स्टिचिंग देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कहीं पे भी डाउट आए तो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। हमने कटिंग कर लिया है एंड सबसे पहले हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। पहले मैं अपनी डॉटर का जो ड्रेस है उसका जो नेक है वो मैं फिनिशिंग कर रही हूँ। नेक फिनिशिंग करने के बाद हम शोल्डर जॉइन करेंगे। शोल्डर जॉइन करने के बाद जो आर्म राउंड है उसकी फिनिशिंग करेंगे। देन साइड से स्टिच करके फिटिंग कर लेंगे। देन उसके बाद हम नीचे फ्लेयर ऐड कर लेंगे।
साइड्स में मैंने स्टिच कर लिया है सारे, ओवरऑल नेक लाइंस, आर्म लाइंस फिनिशिंग किया, पीछे प्लेकेट लगाया जिसमें ऐसा हुक लगाया है, और नीचे जो फ्लेयर बनेगा वो 7 इंच का फ्लेयर बनेगा। इसमें पॉकेट्स भी मैंने अटैच किया एंड दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। आई होप आपको ये ड्रेस बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही और वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।